चलो, सो फर्स्ट एक्सरसाइज वाज डन। फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूला एक बार मैं फिर से रिकैप लेने वाली हूँ उसका, बिकॉज काफी दिन हो गए, बीच में एक वीक हो जाता है तो थोड़ा सा गैप बहुत हो जाता है उसमें, है ना। सो आई विल जस्ट रिवाइज। सबसे पहले हमने देखे थे कुछ फॉर्मूला, विच इज if y is equal to fx, then dy by dx is equal to f dash of x. ठीक है। सो व्हाट यू हैव, कांस्टेंट अगर है हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव कितना आता है, 0। ओके, x रेज टू n है हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, nx रेज टू n minus 1. इफ यू हैव रूट x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2x. इफ यू हैव 1/x, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x². ठीक है। इफ यू हैव a रेज टू x, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, a रेज टू x log a. ओके। इफ यू हैव e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू x. इफ यू हैव log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, है ना। ये सब चीजें हमने देखी थी। फिर हमने और एक कॉन्सेप्ट देखा था, इफ यू हैव कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद सम फंक्शन, देन उसका डेरिवेटिव कैसे आता है, k को तुम बाहर निकालते हो मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में होता है तो चीजें अलग है, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो चीजें अलग है. सो इफ यू हैव कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन विद फंक्शन, दैट k कैन बी टेकन आउट. सो k is taken out, so what is left inside, derivative of x with dx. ठीक है। नेक्स्ट इज हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे. लेट्स से यू हैव y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन हो रहा है. सो हाउ टू फाइंड आउट dy by dx is du by dx प्लस और माइनस dv by dx, है ना. फिर हमने देखा था प्रोडक्ट रूल में क्या था, u एंड v क्या है यहाँ पे, u एंड v फंक्शंस है. ओके, सो u एंड v आर व्हाट, फंक्शंस ऑफ x. u and v are what, functions of x. So if you have y is equal to u into v, मतलब अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं अपन, dy by dx is equal to v into du by dx plus u into dv by dx. ठीक है. Now if you have y is equal to u upon v, then dy by dx कैसे आता है, dy by dx is v into du by dx minus u into dv by dx. All right. Okay. So if you have y equal to u upon v, then this is the formula. So if two functions are divided, your formula is like this. If two functions are multiplied, your formula is this. And if two functions are added or subtracted, your formula is this. Okay. So ये सारी चीजें हमने पिछले वीक में देखी थी. अब अपन देखने वाले हैं 9.2 एक्सरसाइज. 9.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो कुछ मतलब अलग नहीं है, सेम चीज है. ओके, जो हमने अभी तक देखा है 9.1 में, सेम चीजें यहाँ पे रिपीटेड है इसमें 9.2 में. सो व्हाट आर द थिंग्स, डिफरेंशिएट, ध्यान दो, चलो अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1. ओके, कौन सा फॉर्मेट है ये, क्वेश्चन फॉर्म है, बिकॉज वी हैव फंक्शन अपॉन फंक्शन. x इज ऑल्सो फंक्शन, x प्लस 1 इज ऑल्सो फंक्शन, सो यू हैव फंक्शन अपॉन फंक्शन. ओके, सो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, कोशेंट रूल लगेगा, बिकॉज यू हैव फंक्शन अपॉन फंक्शन. ठीक है. सो कंपल्सरीली यहाँ पे u इज व्हाट, x, v इज व्हाट, x प्लस 1. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर, dy by dx is equal to derivative of x upon x plus 1 whole divided by x. क्या फॉर्मूला होता है dy by dx का, what is the formula of dy by dx in case of quotient rule, क्या होता है फॉर्मूला, v du by dx minus u dv by dx upon v square. ठीक है. So you have
x as u and x plus 1 as v. ठीक है, so what you can do, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, v is x plus 1, du by dx u is x minus u is x, v is x plus 1 with dx upon v square मतलब x plus 1 का स्क्वायर. ठीक है, so v is what, x plus 1, u is what, x, ये तुम्हारा u है ना, and this is your v. So just substituting these values, v की जगह पे क्या लिखोगे, x plus 1 लिखोगे, u की जगह पे क्या लिखोगे, x लिखोगे, u की जगह पे x, v की जगह पे x plus 1. ठीक है, so क्या आएगा फिर ये, what is this, x plus 1 dx by dx तो 1 होता है. हाँ, कितना है आंसर बोलो, 1 upon x plus 1 whole bracket square. वेरी गुड, परफेक्ट, माइनस x. अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था पहले, क्या बताया था, अभी थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना शुरू करो, बट सिंस दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर सो मेनी डेज आई विल स्प्लिट इट आउट. dx by dx plus derivative of 1 with dx whole divided by x plus 1 square. ठीक है, so dx by dx कितना आया, 1 आया, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है, 0 ही होता है, कांस्टेंट है ना 1, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ओके, सो यस, ऐसे डायरेक्टली भी तुम लिख सकते हो, इनफैक्ट यही लिखना शुरू करो, बिकॉज अभी आगे जाके हमें यही करना है. 12th में तुम्हें ये चैप्टर है, 12th का पूरा पार्ट 1 90% इस पे डिपेंड है. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, x plus 1 minus x, 1 आया ना ये, so x minus x upon x plus 1 square. So minus x plus x will go, what is left with us, 1 upon x plus 1 का square. Alright, okay. कुछ कनेक्शन में आवाज में प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे बताओ, बिकॉज नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे नेटवर्क स्विच करना पड़ेगा. सो बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो इमीडिएटली. ठीक है, सो इफ यू आर डन विद दिस आई विल मूव टू सेकंड वन. कल परसों में ये खत्म हो जाएगा. तो कल 10 बजे. हाँ एवरीवन, नेक्स्ट y is equal to x square plus 1 upon x. ट्राई करो, चलो खुद से, खुद कोशिश करो. u upon v भी लगा सकते हो, या फिर u upon v थोड़ा सा टफ जाएगा, वो भी सही है. आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट यू कैन स्प्लिट इट आउट, ऐसा भी कर सकते हो. सो y क्या हो जाएगा, x square upon x मतलब x हुआ and 1 upon x. अब इसका डेरिवेटिव लो, ये ज्यादा सिंपल होगा. u upon v लगाने से अच्छा इसको अप्लाई करो, ये ज्यादा इजी होगा. इसको सॉल्व करो, ट्राई आउट, टेक डेरिवेटिव. तुम्हारा कॉलेज कौन सा है, युक्ता, दस्तूर है क्या? नहीं, दस्तूर तो 11:30 बजे होता है. कहाँ गई, गायब हो गई थी, है ना मीटिंग में. कौन सा कॉलेज है तुम्हारा, विच कॉलेज? आवाज जा रही है क्या मेरी? Am I audible? Yes, आवाज जा रही है ना मेरी प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Yes. क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है.
dy by dx is derivative of x plus 1 by x with dx. ठीक है? मैम 2x square minus x plus 1 upon x square. 2x square. 2x square नहीं आना चाहिए था. क्या होगा फिर dy by dx? देखो dy by dx is equal to मैम 2 आ रहा है मेरा. 2. तुम्हारा भी आ रहा है? ओनली 2. नहीं, ओनली 2 तो नहीं आएगा. यही कर रहे हो ना? यस. फर्स्ट स्टेप करेक्ट है. इसका डेरिवेटिव लिया एंड इसका डेरिवेटिव लिया. अब x dx by dx तो 1 होता है एंड 1 by x का डेरिवेटिव मैंने रेडीमेड दिया हुआ है. देखो -1 upon x squared. It is readily available. -1 upon x squared. So this is -1 upon x squared. What mistake you did? मैम मैंने वो डिवीजन का फॉर्मूला लिखा था इसलिए मैंने वैसे ही कंटिन्यू किया. Still you should get. तो देखो ना, डिवीजन का फॉर्मूला लगाने के बाद भी आना चाहिए. u upon v लगाया होगा ना तुमने. अच्छा ओके, यहाँ पे क्या? यहाँ पे यस मैम. स्टिल यू शुड गेट. चलो देखते हैं ना. हाँ मैम आ रहा है, मैंने भी वैसे ही किया. आ रहा है ना? सेम आंसर आ रहा है ना? हाँ मैम. वही तो. x square plus 1 upon x with dx. So if you use u upon v also, you should get same. v du by dx minus u dv by dx upon v square. So what you will get? X into x square का डेरिवेटिव 2x plus 1 का डेरिवेटिव 0. x square plus 1 and dx by dx कितना होगा? 1 on x square. आया? मैम ये स्टेप तो करेक्ट है मेरी भी. ओके, देखते हैं ना. सो 2x plus 0 मतलब 2x होगा एंड 2x into x मतलब 2x square होगा. ठीक है. अब ये माइनस साइन है ना अंदर, तो उसको ले लो यहाँ पे. यस मैम, वो मैंने x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx अपॉन dx लिखा, पर उसके अगले स्टेप में x स्क्वायर नहीं लिया मैंने, गलती से x प्लस 1 ही लिया, इसलिए हो गया. ओके. So 2x square minus x square will be x square minus 1 upon x square. So you can split it out, no? X square upon x square minus 1 upon x square. So this is 1 minus 1 by x square. So you got the same answer. Okay, but this is quite lengthy. So मैंने वही बोला कि वो वाला सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा इजी है. चलो ट्राई आउट नेक्स्ट वन. Try out this one. Just a second. चलो डन विद दिस. यस, आ रहा है कुछ, सॉल्व करते हैं. minus ex upon ex plus 1 whole bracket square. परफेक्ट. सो न्यूमरेटर को u लिया, डिनोमिनेटर को v लिया. e raised to x plus 1. So dy by dx is derivative of 1 upon e raised to x plus 1 with dx. So v du by dx minus u dv by dx upon v square.
यही फॉर्मूला ना अपना, यस, v du by dx minus u dv by dx upon v square, ठीक है। नाउ 1 का डेरिवेटिव 0 आया, यस, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा बिकॉज एवरीथिंग विल बी 0 सिंस इट इज मल्टीप्लाइड, सो 0 माइनस e raised to x plus 1 upon e raised to x plus 1 square, ठीक है। 0 माइनस, एक मिनट, ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, इसको स्प्लिट करेंगे अपन, e raised to x का डेरिवेटिव with dx प्लस 1 का डेरिवेटिव with dx माइनस e raised to x का डेरिवेटिव क्या हो गया, e raised to x प्लस 0 upon e raised to x plus 1 square, so you should get this minus e raised to x upon e raised to x, okay। so yes, यहाँ पे बस भूलना मत, तुम्हें ये अंदर डेरिवेटिव लेना है e raised to x का एंड 1 का, ठीक है। चलो नोट इट डाउन जितना हुआ है। हाँ बोलो क्या हुआ। हम पीछे आंसर में माइनस साइन नहीं है। गलत है वो, गलत है, इट्स रॉन्ग, ठीक है। माइनस साइन हैज टू बी देयर बिकॉज़ ये 0 ही आएगा ना पूरा। हाँ बोलो। एक्स प्लस 1 ओ कैसे 0 आया? क्योंकि ये देखो ना d1 विद dx क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो 0 के साथ तुम किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, ओके। ये जो d1 विद dx है ये 0 आता है ना, यस मैम। कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है। जिनका हुआ है वो लोग ये ट्राई करो, बाकी लोग लिख लो। मैम e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स का आंसर e रेज टू 2x आता है क्या? यस, e raised to x into e raised to x ना, हो e raised to 2x आता है वो। कौन सा क्वेश्चन कर रही है तू? अच्छा मैंने गलत क्वेश्चन लिखा क्या? ओह सही बोल रही है, e raised to x into e raised to x, e raised to 2x आता है, वही क्वेश्चन है तुम्हारा। चलो ट्राई आउट दिस वन सब लोग। e raised to x upon e raised to x plus 1 whole square. e raised to Yes, x ma'am. upon e raised to x plus 1 whole square, Whole Whole square. square. ओके। सो u कितना हुआ, e raised to x हुआ, v कितना हुआ, e raised to x plus 1 हुआ, ठीक है। सो फिर से dy by dx is equal to v into du by dx ना, so v into du by dx minus u into dv by dx, so v के जगह पे e raised to x plus upon v square, ओके, अपॉन v square। तो क्या हुआ फिर, e raised to x plus 1, e raised to x का डेरिवेटिव क्या हो गया, e raised to x आता है, टेबल चेक करो, ओके, माइनस e raised to x into डेरिवेटिव ऑफ e raised to x with dx plus डेरिवेटिव ऑफ 1 with dx whole divided by e raised to x plus 1 whole square। कितना आया करिए, how much is this? ओपन द ब्रैकेट्स, e raised to x into e raised to x क्या हो गया, e raised to x स्क्वायर रखो, e raised to x into 1 क्या हो गया, e raised to x हुआ, दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो रहा है, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल गेट, e raised to x plus 1 square, ऑलराइट। अब again open the brackets, what you will get, e raised to x का square plus e raised to x minus, open the bracket,
e raised to x plus 0 वैसे भी e raised to x हो जाएगा. So e raised to x into e raised to x क्या हो गया? e raised to x का square upon e raised to x plus 1 square. So this and this will go. So what is left with us? E raised to x upon e raised to x plus 1 का square. So simplification is also important. At the same time, डेरिवेटिव के साथ साथ तुम्हें सिंप्लीफिकेशन भी आना जरूरी है. चलो y को ट्राई, ये x अपॉन log x को ट्राई करो. मैम log x minus 1 upon log x whole bracket square. करेक्ट. चलो बाकी लोग यस मैम, मेरा भी वही है. गुड. चलो बाकी लोगों का आया. यस. Yes, ma'am. Everyone got this? Good, very good. So yes, dy by dx is equal to, this is u, this is v. So v du by dx, okay, minus u dv by dx upon v square. ठीक है. सो ये log x आया एंड dx by dx कितना हुआ? 1 हुआ. माइनस x into डेरिवेटिव ऑफ log x, चेक इन दी टेबल, यू विल गेट 1 by x, है ना. डेरिवेटिव ऑफ log x क्या मिल जाएगा? 1 by x whole divided by log x square. So this and this will go. So what is left with us? Log x minus 1 upon log x square. Good, very good, correct answer. अगला क्वेश्चन ट्राई करो. 6th is 2 raised to x upon log x. This is the 6th question. 2 raised to x upon log x. चलो ट्राई करो. मैम 2 raised to x upon x का सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा? कुछ नहीं होगा उसका, वैसे ही रखना पड़ेगा. 2 raised to, बस इसमें ना एक ही चीज हो सकती है, तुम सिर्फ न्यूमरेटर से ना 2 raised to x को कॉमन निकाल सकते हो. बस यही एक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है. बाकी मुझे तो कुछ लग नहीं रहा. टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है. इसका भी उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे. टेक्स्ट बुक के बहुत सारे आंसर्स गलत है. मैम 2x log x log 2 minus 2 raised to x upon log x whole bracket square. सही है.
दिस इज u, दिस इज v. चलो बाकी लोग ट्राई करो फटाफट. मैम 2 raised to x का डेरिवेटिव 2 raised to x log 2 आया, तो उसको हमें log x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 raised to x log 2 ये एक ही टर्म है या 2 raised to x into log 2 ऐसी टर्म है वो? 2 raised to x into log 2 है वो. ओके मैम. dy by dx. सिर्फ बातें करते तो मुझे भी लगता है मैं इंसानों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं मूर्तियों को पढ़ा रही हूँ. So discussions किया करो, अच्छा लगता है. Okay, so v du by dx, v du by dx minus u dv by dx upon v square ना. ठीक है. So you have log x and इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 raised to x log 2 minus 2 raised to x log x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 upon x whole divided by log x का स्क्वायर. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तीनों की तीनों टर्म्स log x 2 raised to x and log 2 everything is in multiplication, so you can take that 2 raised to x out, कॉमन ले सकते हो. ठीक है. तो अंदर क्या बचता है? log x log 2 minus 1 by x upon log x का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो जिनका हुआ है ये. यहाँ पर ज्यादातर लोगों को नीचे क्वेश्चंस हैं. यस. एनीवन? थोड़ा सा सिंप्लिफिकेशन इसका लेंथी जा सकता है. Still. 4e2x upon 2ex plus 1 upon 1 whole bracket square. 4 e raised to 2x आया. ऐसा नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं आना चाहिए. Sorry, बाकी सब कुछ सही है. 4e raised to x. सही है. गुड. चलो, so this is u, this is v. Okay, so dy by dx is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square upon v square. ठीक है. So v du by dx minus u dv by dx upon v square. ठीक है. तो क्या हुआ फिर ये? What is this? 2 e raised to x plus 1. यहाँ पे सेपरेट आउट होगी ना चीजें. डेरिवेटिव ऑफ 2 e raised to x with dx minus derivative of 1 with dx minus 2 e raised to x minus 1.
derivative of 2 e raised to x with dx plus derivative of 1 with respect to dx whole divided by 2 e raised to x plus 1 whole square. ठीक है? So what is this? 2 e raised to x plus 1. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 तो बाहर आ जाएगा, मैंने बताया था जब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो यू कैन टेक इट आउट. ठीक है, 2 बाहर आया, देन अंदर कौन बचा? e raised to x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0. अगेन यहाँ पे यू कैन टेक दिस 2 आउट सिंस इट इज इन मल्टीप्लिकेशन एंड 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 whole divided by 2 e raised to x plus 1 whole square. Right. अब what next? 2 e raised to x plus 1. यहाँ पे क्या होगा? e raised to x ही आएगा ना उसका डेरिवेटिव. 0 को तो वैसे भी हमें कंसीडर नहीं करना है. 2 e raised to x plus 1. ये 2 आया और e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही आया. ओके, होल डिवाइडेड बाय कुछ तो गड़बड़ हुआ, माइनस में चाहिए यहाँ पे. राइट, सो 2 e raised to x plus 1 whole square. Okay, so 2 e raised to x you can take common. 2 e raised to x you can take common. 2 e raised to x you can take common. What is left inside? 2 e raised to x plus 1 minus 2 e raised to x minus 1. ये सिंप्लीफिकेशन के लिए आसान हो जाएगा. इवन इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स इट इज ओके, बट ये थोड़े आसान है. ठीक है, वो ओपन करेंगे तो थोड़े बहुत स्क्वायर वेयर के टर्म्स आ जाएंगे ना. दैट इज व्हाई आई एम अवॉइडिंग दैट. तो अभी अगर तुमने देखा तो दिस एंड दिस विल गो. सो कितना हो जाएगा फिर ये? 2 e raised to x into bracket 1 plus 1 whole divided by 2 e raised to x plus 1 whole square. So this is 1 plus 1 2 ना, ये तो दोनों चले गए. So plus 1 minus minus plus 1 हो जाएगा. So this is 4 e raised to x upon 2 e raised to x plus 1 whole square. Okay, so this is the answer. So थोड़ा सा लेंदी है simplification के लिए, but yes, take your time, try to understand this, and those who are done with this question, try to solve next one. Next one is ठीक है, कुछ ज़्यादा difficult नहीं है, but yes, try to understand this simplification. So this is very simple. मैम वो 1 plus 1 कैसे आया? Here you have plus 1, okay. Then you have minus and minus. तो ये minus minus plus 1 हो गया ना. Got it? Yes मैम. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट. पहले समझ लो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन. जिनको नहीं आया था आंसर, आई गेस ओनली विरजा गेव द आंसर. सो जिनको नहीं आया था फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड देन मूव टू 8th वन. ठीक है, कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझे पूछो. मैम यहाँ ये 8 सम सॉल्व करते तब e raised to x plus 1 into derivative of x plus 1 into x minus 1 upon dx. तो x plus 1 और x minus 1 में मल्टीप्लिकेशन है, तो वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब. मैं अच्छा मेथड बताती हूँ. तुम वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब सही सोचा है तुमने, बिल्कुल सही सोचा है.
In case of v du by dx, you will have to apply multiplication rule. But let's simplify this question. This is a plus b and a minus b. So it is a square minus b square. Right? So it becomes simple. So x square minus 1 upon e raised to x plus 1. That's it. Okay? ये ज़्यादा बेटर जाएगा तुम्हें as per my opinion. इससे करो. तुम डिवीजन तो कर ही रहे हो, ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से फिर से. Try to solve. Ma'am, x into e raised to x minus e raised to x minus x cube plus x upon ex plus 1 whole bracket square. x क्यूब कैसे आया? x क्यूब नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से. यस, क्यूब नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से. dy by dx u upon v है ना. So this is v du by dx minus u dv by dx upon v square. Okay, v du by dx minus u dv by dx. तो क्या हो रहा है इसका? e raised to x plus 1. इसको स्प्लिट करो, है ना. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर with dx minus derivative of 1 with dx minus x square minus 1. इसको भी स्प्लिट करो. Derivative of e raised to x with dx plus derivative of 1 with dx. And whole thing divided by what? E raised to x plus 1. मैम मेरा e raised to x x square plus 2x plus e raised to x divided by e raised to x plus 1 का square. Okay, matching, somewhat matching. Okay, so e raised to x plus 1. x square का डेरिवेटिव क्या लिखा तुमने? It is like x raised to n, nx raised to n. 2x. वेरी गुड. सो एक्स स्क्वायर भी उसी की तरह होगा ना, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन होता है. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी वैसे ही हो जाएगा. n is 2 x raised to 2 minus 1. So this is 2x raised to 1. So this is 2x. Okay. So this is 2x minus 1 का डेरिवेटिव 0. This is x square minus 1. ये e raised to x का डेरिवेटिव हो जाएगा एंड ये 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय e raised to x plus 1 whole square. ठीक है. Now
ओपन द ब्रैकेट्स, ये तो 0 है तो 2x into e raised to x plus 1 minus e raised to x into x square minus 1 upon e raised to x plus 1 whole square. ठीक है, so what is this? ओपन करोगे तो ब्रैकेट को 2x e raised to x plus 2x minus x square e raised to x plus e raised to x upon e raised to x plus 1 whole square. Okay, so this is the answer, final answer. This is okay, so this is your final answer. So x cube वगैरह तो आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. मैम यहाँ x स्क्वायर ब्रेक हो रही है आवाज, शायद मेरे तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है. 1 मिनट. नो मैम कुछ नहीं. नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है ना, आवाज सही सुनाई दे रही है. यस मैम. ओके, मैम ये पूरा आंसर दिखाओ ना. यस. पहले तो उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. मैम पीछे आंसर में उन्होंने ई रेस टू एक्स कॉमन लिया है, तो हमें वो करना पड़ेगा या यहाँ पे हम कंपल्शन छोड़ेंगे नहीं तो रहता है, चलेगा? कंपल्शन नहीं रहता है. whenever there is a question of differentiation, you just have to differentiate it properly. ठीक है. चलो नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट है अभी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, स्मॉल पार्ट. एप्लीकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब ऐसे कुछ मेजर ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट वर्डिंग्स अलग है. मतलब there is a relation given to you between demand and price, and also there is a supply and price. तो जैसे हमें अभी फंक्शन दिया रहता था इन टर्म्स ऑफ x, वैसे तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस. ओके, so maybe demand is given to you as a function of price and supply is given to you as a function of price. So when you find out rate of change of demand, see, derivative is what? Basically rate of change. Derivative is what? Rate of change. Rate of change मतलब डिमांड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, बट कितना फास्ट और कितना स्लो चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज. रेट मतलब हाउ मच फास्ट, हाउ मच स्लो. Okay, so rate of change of demand मतलब how fast the demand is changing or how fast the supply is changing, that is rate of change. ठीक है, so rate of change of demand with respect to price. So this is basically what? Rate of change of demand, that is change in demand with respect to price.
and we can also call it as marginal demand. इसको अपन marginal demand भी बोल सकते हैं, ठीक है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिमांड प्राइस के साथ चेंज तो हो रही है, बट कितना फास्ट कितना स्लो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इज बेसिकली व्हाट, द स्पीड एट व्हिच डिमांड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल डिमांड. सेम थिंग हैपेंस विद सप्लाई. रेट ऑफ चेंज ऑफ supply with respect to price. So what do you mean by this? ds by dp. Again you can call this as marginal supply. Marginal supply मतलब सप्लाई कितना, सप्लाई चेंज तो हो रहा है प्राइस के साथ, बट कितना फास्ट कितना स्लो, व्हाट इज इट्स रेट ऑफ चेंज, दैट इज द मार्जिनल सप्लाई. So different कुछ नहीं करना है, you just have to derivate, you just have to differentiate what demand expression and supply expression. Okay, so differentiation ही करना है, just terminologies अलग है. पहले अपन dy by dx ढूंढते थे, अब अपन dd by dp ढूंढ रहे हैं. पहले अपन dy by dx ढूंढते थे, अब अपन ds by dp ढूंढ रहे हैं. So since demand is depending on price and supply is depending on price, you're just finding out their change with respect to price, how that demand is acting, how that demand is changing with respect to price, how that supply is changing with respect to price. This thing we are going to find out with marginal demand and marginal supply concept. All right. There is one more thing, average cost and marginal cost. Again, you can say marginal cost. So marginal cost में, let's say C is cost, you can say total cost. X is number of units, let's say. X is number of units. Number of units is basically demand. Okay. So if you want to find out marginal cost, how will you get it? Derivative of cost with respect to number of units. It is marginal cost. And how to get average cost? Average cost is what? Total cost upon number of units. This is average cost. This is marginal cost. Marginal word corresponds to rate of change. Marginal word corresponds to what? Rate of change. Okay. So whenever they are saying marginal cost, that means it is rate of change of cost. How fast that cost is changing with respect to number of units. All right. Yes. समझ में आ रही बात? There is one more concept, तुम्हें पता होगा already, revenue. Revenue is what? Price into demand. है ना? So if you want to write R equal to P into D. Okay? How to get average revenue? Average revenue is total revenue upon demand. Okay, I will write it properly. What is average revenue? Average revenue is total revenue upon demand. So what is total revenue? Price into demand upon demand. So DD will go, what is left with us? Price. So average revenue is nothing but price. Okay, average revenue is nothing but what? Price. चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे तुम बोलते हो ना कि मतलब कॉमर्स वालों को क्यों पढ़ना है डेरिवेटिव, वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट ऐसे कुछ यूज नहीं है उसका. जो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत आगे करते हैं उनको थोड़ा बहुत लग सकता है, अदरवाइज कुछ ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है. बट यस, सिंस इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक वी शुड अंडरस्टैंड दिस. Demand is a function of price, supply is a function of price. That means demand is depending on price and supply is depending on price. Okay, so demand change होगा अगर prices में कुछ changes आते हैं, supply change होगा अगर prices में कुछ changes आते हैं. So हमें वो rate of change of demand ढूंढना है, how fast that demand is changing or how slow that demand is changing with respect to price. Rate of change of supply हमें ढूंढना है, how fast that supply is changing or how slow that supply is changing with respect to price. That thing we need to find out. Okay, and इसी को हमने नाम दिया है marginal demand and marginal supply. Same thing is for marginal cost. Marginal cost मतलब how fast that cost is changing.
Okay, so here we are taking the help of number of units. So cost is changing with respect to number of units. So it is rate of change of cost with respect to number of units. जैसे यहाँ पे था rate of change of demand with respect to price. Again, rate of change of supply with respect to price. Similarly, rate of change of cost with respect to number of units. Okay, then ये एक कॉन्सेप्ट हुआ अपना मार्जिनल कॉस्ट वाला, ये मार्जिनल डिमांड वाला हुआ, मार्जिनल सप्लाई वाला हुआ. अब रेवेन्यू इज व्हाट? प्राइस इनटू डिमांड. Okay, so R is P into D. Average revenue कैसे find out होता है? Total revenue upon demand. Okay, so total revenue is price into demand upon demand. DD will go and P will be left. So average revenue is nothing but what? Price. Okay, average revenue is nothing but what? Price. Okay, so note it down fast. इसके ऊपर के जो हाँ profit क्या हो सकता है? Can you tell me? Profit, total profit क्या हो सकता है? Selling price minus cost price. In case of revenue and cost, I am asking revenue minus cost will be your total profit. Okay, revenue minus cost, that will be total profit. All right. So ये कुछ terms है, ये तुम्हें जरूरी है और सेम टॉपिक तुम्हें अगले साल भी है. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो बताओ, नोट करो फटाफट. एंड इफ यू आर डन विद द राइटिंग यू कैन लीव. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन लीव. डाउट्स हो तो बोलो, लिखो बट इसको पहले कॉपी करो.